There's a big story that I want to talk about in India's war on red terror. The war against left-wing extremism. It's now in its most decisive phase, and we report a major victory in this battle. So Tripuri Thirupati, alias Devuji, he surrendered. The man you see on your television screen, he's been leading the red terror war for the past 4 decades. He's been a very crucial person in the red terror war against the state. Devuji is now 62 years old. He carries a reward of 1 crore on his head. He's seen as the key face of that faction that continued to push for armed struggle. He surrendered in Telangana on Sunday after being underground for 40 years in the past. So who's Devuji? Devuji is the General Secretary of the CPI Maoist, and being the General Secretary of this red terror organization, that's like the highest position in the left-wing extremism hierarchy. He'd earlier served as the Central Committee and the Politburo member. He played a very critical role in planning and coordination of red terror operations in different parts of the country, across multiple states. This comes ahead, the surrender comes ahead of the March 31, 2026 deadline kept by Union Home Minister. This deadline had been set by Union Home Minister Amit Shah to eliminate the threat of red terror to our country. Now, what does this indicate? And I want you to factor in. So when the General Secretary of the CPI Maoist armed struggle against the state surrenders, and he's a man who has a reward of 1 crore on his head, that indicates that the CPI Maoist, information that sources are telling India today, the Politburo is now reduced to just 1 active member who remains at large. And that's Mr. Besra, alias Sagar or Sunirmal. He's the only one who's at that. The Central Committee's strength overall is now down to perhaps between 4 to 5 active members. And originally, the Central Committee had 50 members. There's been massive attrition since 2024. This is the second year of that massive operation that was undertaken to remove the threat of red terror in our country. 500 plus Maoists have either been neutralized or arrested in operations that started in 2024. In 2025 alone, last year, 285 Maoists were neutralized. So far in 2026, 22 have been neutralized. More than 100 memorials, and we'll show you images of those memorials. They were right in the heart of the red terror belt where the state hadn't been in the past 40 years. That's when the security forces are not only entering, they're setting up what are known as COBs or company operating bases, and from there operations are mounted using technology, whether it's drones or security forces on their motorcycles with handheld thermal imagers, night vision devices, modern weapons. They're often on motorcycles, moving in groups of 2s and 3s, always the part of buddy system. So all of this indicates that the Maoists are now demoralized and their strongholds are being demolished. There's also another word on internal split in the organization. And the split was triggered after the surrender of one of their key strategists, Majula Venugopal Rao, alias Sonu. That happened in October 2025. Ever since that collapse just started, they started falling like 9 pins. Devuji emerged as the second senior most leader. He continued to advocate armed struggle till the time he too surrendered. His surrender is now being seen as a collapse of the armed wing. I quickly want to cut across to India Today's Jitendra Bahadur Singh, and Jitendra has reported from the heart of the red terror belt. He's reported extensively from Chhattisgarh, from Madhya Pradesh, from Jharkhand, from Odisha. He is just back from Guwahati, where the Home Minister was. Jitendra, देवूजी के आत्मसमर्पण को सुरक्षा बल किस रूप में देख रहे हैं? क्या मार्च 31 की वो डेडलाइन जो गृह मंत्री अमित शाह ने रखी थी, उस दिशा में, सही दिशा में बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि देव जी का सरेंडर जो होना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कई सालों से, पिछले लगभग 40 सालों से जो है ये अलग अलग जंगलों में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अधिकारियों से बातचीत हुई, उनके मुताबिक अब जो है कमांडर लेवल की अगर बात करें तो 1 से 2 जो है वो नक्सली कमांडर जो कि बड़े स्तर के हैं
वो बचे हुए हैं जिनके खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 चलाया जा रहा है कोर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। ये छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ तेलंगाना और उड़ीसा के, तो इन तमाम इलाकों में एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त लॉन्च किया गया है। और आने वाले दिनों में गौरव आप देखेंगे कि जो बड़े नक्सली हैं, चाहे मिसिर बेसरा हो या फिर दूसरे नक्सली जो बचे हुए हैं कमांडर्स, उनको भी इसी ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज या तो किया जाएगा या फिर वो सरेंडर करने पर उनको मजबूर किया जाएगा। तो इस तरीके के ऑपरेशन इस वक्त चलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों की जो विचारधारा है उसको पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमने बुलडोजर एक्शन भी देखा कि छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में नक्सलियों ने जो अपने मॉन्यूमेंट्स बना रखे थे, इसके साथ साथ अपने स्मारक बना रखे थे, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। और 203 से ज्यादा जो है नक्सलियों के स्मारक को इस वक्त छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड, इन तमाम इलाकों में ध्वस्त किया गया है। ऐसे ही नक्सलियों का जो हाइडआउट्स हैं, जो कि उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स ने अलग अलग जगहों पर छिपा रखे थे, हथियार, आईडी, इन तमाम चीजों की छानबीन की जा रही है। और माना जा रहा है कि इसको लेकर के बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलेगी। और इसी क्रम में 300 नक्सलियों को घेरा हुआ है इस वक्त, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 जो चलाया गया है, वहां पर नक्सलियों को घेरा हुआ है और वो या तो सरेंडर करेंगे या फिर उनको मार गिराया जाएगा। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह हैड डिस्क्राइब्ड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी. Almost 1/3 of India's districts, if I remember correctly, about 160 odd districts were infested with left-wing extremists, and all the way from Nepal border down pockets of Uttar Pradesh, then Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, going down to Karnataka, Odisha on the left, coming to Maharashtra on the right, going down to Karnataka, in pockets of Kerala at one point of time. So just imagine how wide and deep was the red corridor.